Just waiting for now. Khadija is not joining from audio. Ilham and Khadija, just waiting for you guys. Please write the topic's name. Now we are going to, if you remember, we were talking about bonding theories, and in that we said that we first of all learn the valence bond theory, and then we are going to learn the molecular orbital theory. So we are going to start the molecular orbital theory. Right? There are so less students right now. Please write the topic. Molecular orbital theory, or it is MOT. Aditya, can you please turn your cameras on? Aditya, just waiting for you now. Yes. Molecular orbital theory. थोड़ा जवाब देने की कोशिश कीजिएगा. If we talk about atoms, then where are the electrons present in an atom? Atoms में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? बताइए. In special type of orbitals. They are present in the orbitals, correct? What are orbitals? The area around nucleus which has the maximum probability of, where we have maximum probability of finding an electron. So in atoms, electrons are in atomic orbitals. This is something that we already know, right? Please don't write this. Please understand this right now. In atoms, please don't write, just see electrons are in atomic orbitals. So the people who were studying chemistry at that time, they said that to simplify things, we can say that if in atoms, electrons are in atomic orbital, in molecules, electrons will be, MOT says in molecules, electrons are in molecular orbitals. Is that clear? Yes or no? Please tell me. बहुत आसान, yes or no? Yes, sir. ठीक है. In molecules, electrons are in molecular orbital. This was the first, this is the starting of molecular orbital theory. Okay. Now, please see next. If I talk about the molecular orbitals, so molecular orbitals are formed by linear combination of atomic orbitals. We call this LCAO. Okay. देखिए, अगर हम atomic orbitals की बात करते हैं, so we already know that we have S orbital, P orbital, D orbital, and F orbital. These are the substances, and inside them we have different orbitals. But what are molecular orbitals? So molecular orbitals are nothing but they are made by atomic orbital itself by linear combination, by the combination of atomic orbitals. By the combination of atomic orbitals. So how do atomic orbitals combine? Please write these 3 points, then we will write the next topic, that is linear combination. Linear combination of atomic orbitals.
Everyone done writing this? Linear combination sir. of it. अच्छा, please write. इल्हाम जल्दी लिखिए। खदीजा आपका हो गया? ओके, इल्हाम जस्ट वेटिंग फॉर यू। हो गया इल्हाम? ठीक है, यू कैन लोअर योर हैंड। तुम ध्यान से सुनिएगा जरा, ठीक है? We have to combine the atomic orbitals in order to form what? In order to form the molecular orbitals. If I just talk about the s orbital, ठीक है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, when we are talking about molecular orbitals, the atomic orbital, you have one atomic orbital, there will be another atomic orbital, they both will combine, don't write anything, and they will form molecular orbital. Now both of these atomic orbitals will be coming from different atoms, atom A and atom B. So atomic orbitals of different atoms, they combine together to form molecular orbitals. If I just suppose that the atomic orbitals which are taking part in, which are combining, these are s orbital. These are what? S orbitals. So we have we have s orbital like this. From the B atom also we will have s orbital like this. Okay? Yes. Now the s orbital of A and B, there will be some with positive phase, there will be some with negative phase. बात सही है? बात सही है ना? ठीक है, तो अगर हम ए की बात करें तो वी हैव टू प्रोबेबिलिटीज कि उसमें अगर हम मान लें 100 एटम्स, ठीक है, 100 एटम्स ऑफ ए, तो 50-50% चांसेस है कि उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास 50 पॉजिटिव फेज के, 50 नेगेटिव फेज के. जस्ट बाय शेयर प्रोबेबिलिटी वी कैन से दैट these are the atomic orbitals which will be actually present in the atoms that we are taking. ये आपके पास ए एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए आधे, 50 will be positive phase, 50 will be negative phase, और ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया बी के लिए, दिस इज फॉर बी. ठीक है, अच्छा, व्हेन दे आर गोइंग टू कंबाइन, इसमें ध्यान दीजिएगा जरा, व्हेन दे आर गोइंग टू कंबाइन, अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है. देयर इज 50% चांस, 50% क्या मतलब 50% चांस की बात नहीं करेंगे, 50% ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल कंबाइन विथ सेम साइन. सही है ना? 50% जो कॉम्बिनेशन होंगे दे विल बी ऑफ सेम साइन एंड द 50% विल बी ऑफ व्हाट? अपोजिट साइन. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस, ऑल ऑफ यू. अब्दुल हमीद, इल्हाम, इजान एंड खदीजा, मेक सेंस? सर. ठीक है, अब ध्यान से सुनिए. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेज, अभी हम सिर्फ पॉजिटिव फेज की बात करें. सेम फेज एंड अपोजिट फेज, हमारे पास दो चीजें हैं, सिर्फ सेम फेज और अपोजिट फेज. So if I talk about atomic orbitals, so they are nothing but they are wave functions, right? So when I'm talking about positive phase, तो ये आपके पास positive phase हो गया. And if the phases are same, तो हम दो phase को add करते हैं. ठीक है, if the phases are same, we'll add both of these phase, और आपके पास जो resultant होगा, that will be another wave function which is having a higher amplitude. बात सही है ना? इन दोनों को ऐड करेंगे तो, अरे हाँ याना जल्दी बताओ, इस बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सिमिलर केस लेते हैं, बट वी आर गोइंग टू टेक अपोजिट फेज. ठीक है, अगर हम अपोजिट फेज लेंगे तो एक को उल्टा कर लेते हैं. ठीक है, आई एम जस्ट रिवर्सिंग इट नाउ. अब ध्यान से सुनिए जरा, ये आपके पास क्या हो गया? नेगेटिव फेज. नाउ दिस पॉइंट में आपके पास ये पॉइंट है +1, है ना? तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -1. +1 एंड -1 दे विल कंबाइन, तो क्या मिलेगा आपको? 0. उसी तरह से ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी हैविंग नेगेटिव साइन हियर, व्हेन दे आर गोइंग टू कंबाइन, आपको क्या मिलेगा? नथिंग. समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना जल्दी बताओ. ठीक है, सो लेट अस सपोज कि अब यही आपके पास दो चीजें कॉम्बिनेशन के पास, वी हैव टू डिफरेंट रिजल्ट्स. आपके पास दो रिजल्ट है. एक रिजल्ट क्या है हमारे पास, यहां पे आपके पास कॉम्बिनेशन के पास क्या हो रहा है? द एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग, दैट मींस दिस एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट्स व्हाट? द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना? एम्पलीट्यूड क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में, नॉट क्या है भाई, ये साई है
और साई स्क्वायर टेल्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. साई स्क्वायर क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. So as you are seeing, when we are having same phase, and they are combining, the electron density is increasing. और इस केस में क्या हो जा रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हो जा रहा है. अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, I had atom A, I had atom B. इन दोनों का न्यूक्लियस, इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए, the electron density will increase here. Yes or no? Please tell me. बोलो भाई, बढ़ेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अच्छा, अब नेक्स्ट केस लेते हैं जहां पे आपके पास A और B है. Here we are having same sign. Here we are having opposite sign. Now, when the atomic orbitals they are combining, there will be some we are making molecular orbitals, and some molecular orbitals will be having electrons between these two atoms. और कुछ बनेंगे ऐसे जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. So here we will not have electron. That is why there will be what? Here we will say there is no electron. अब इलेक्ट्रॉन तो आपके पास नहीं है, but both of these nuclei will be positively charged. पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे भी होगा. इतना समझ में आया? इल्हाम, खदीजा, अब्दुल हमीद, अब ध्यान से देखो जरा. दिस इज इलेक्ट्रॉन्स ना, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन्स. दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. क्या है भाई ये? ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. नाउ पॉजिटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना? सो इन अ वे यू कैन से दैट ए एटम इज अट्रैक्टेड टू बी एटम. दिख रहा है सबको? करेक्ट है. अब यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ पे वी हैव एटम ए, हियर वी हैव एटम बी, बोथ आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? रिपल्शन, है ना? दिखा सबको? अच्छा, if A and B atoms are attracted towards each other and they are held together, atoms A and atom B are held together, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या बना आपके पास? दिस इज बॉन्ड. इसी को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंड हियर वी आर हैविंग रिपल्शन, तो टूटने लगा, उल्टा हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इतनी बात सबको समझ में आई? Yes, sir. इल्हाम, अब्दुल हमीद आपको समझ में आया? यस, ठीक है, समझ में आ गया. तो अब हम लोग ना लिखना चालू करते हैं चीजों को. ठीक है, आई विल राइट थिंग्स डाउन. उसके बाद फिर आपको आगे समझ में नहीं है तो फिर बताइए. ठीक है, लिखें आप, ध्यान दीजिए यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, क्या लिखा है टॉपिक आपने? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. राइट हियर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसमें नंबर 1 पॉइंट डाल के लिखिएगा. प्लीज राइट MO आर फॉर्म्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड by combination of atomic orbitals of same energy. Of same energy. Second points, half of the MO formed are by combination of atomic orbital with same sign of psi. With same sign of psi. They give rise to bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital, and we will call this BMO. ठीक है, BMO. Bonding molecular orbital with greater stability and lower energy. ठीक है. तीसरा पॉइंट थोड़ा सा बस हम इसको चेंज करके लिख देंगे, हो जाएगा.
half of the MO formed are by combination with of atomic orbital with opposite sign of psi, है ना? यहाँ पे क्या लिखना आपको? Opposite sign of psi. They give rise to anti bonding, है ना? Rise to anti bonding molecular orbital, and we will call this ABMO. इनको क्या बोलेंगे हम? इनको बोलेंगे हम ABMO with greater नहीं lower stability and higher energy. And higher energy. ठीक है, चलिए. These three are most important points. जल्दी से देखिए इनको. Raise your hand one side and right. Everyone is done writing. तो तेजा आप आंसर नहीं कर रहे हैं कुछ भी. Okay. Now, when we are talking about the bonding molecular orbital, we can say that the combination takes place like this. Psi A, it attaches with psi B. ठीक है, और आपको मिलता है एक नया molecular orbital that is known as psi AB. ठीक है, this is the BM. So here we are having same sign, no? Positive, positive, or negative, negative. When we are having psi A and the psi B is having opposite signs, I will take minus psi B. This will give you psi AB, but I will add a star to show that it is. What is the sign after sign of? Sign of psi. This is psi, psi. Psi बोलते हैं इसको. Psychology में जो psi यूज होता है, ठीक है, psi. This is ABMO. ठीक है. So bonding molecular orbital में स्टार नहीं रहेगा. अगर ABMO को दिखाना तो we'll have to write star. Clear है? Yes, sir. इल्हाम आप इधर ही रहिए, इधर उधर मत जाइए आप. इल्हाम ठीक है, इधर ध्यान दीजिए. No. Please see. We will talk about the linear combination of the molecular orbitals. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे एक लिख लीजिएगा. ये हमने लिख लिया ना, क्या लिखा? ऑफ सेम एनर्जी number of MO formed is equal to number of AO combining.
नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग, ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है, वी कंबाइन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स और आपको 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं, बीएमओ और एंड एबीएमओ, राइट। बीएमओ एंड एबीएमओ, उसके बाद देखिएगा एलसीए ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट, of different atomic orbitals to form molecular orbitals, ठीक है। तो नंबर 1 जो हम लोग देखने वाले हैं, that is 1s. So there are two 1s orbitals which are going to combine. Please see. देख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए अब, guys please focus here. Now, when these are combining, they will combine and they will give you 2 different molecular orbitals. One will be called ABMO, the other will be called BMO, है ना। ध्यान से देखिए जरा, नहीं होगा। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना। Now, when both of these are combining, तो क्या होगा, ये दोनों कंबाइन करेंगे इस तरह से, both of them will combine like this, इस तरह से कंबाइन करेंगे एंड ये ऐसे करके बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट अ बीएमओ लाइक दिस, थोड़ा सर्कुलर टाइप का शेप रहता है इस तरह का, यू विल गेट अ बीएमओ, ओके। एंड देयर विल बी स्मॉल पार्ट्स व्हिच आर इस तरह से, तो जो आपके पास एरिया कंबाइन हो गया वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। एंड विच आर नॉट कंबाइंड वो यहाँ पे इस तरह से रहेगा, ठीक है। एक सेकंड, एस में आपके पास बस ऐसे रहेगा, ठीक है ना। यू विल नॉट हैव एनीथिंग बिकॉज यहाँ पे तो एक ही लोग होता है, माय बैड, है ना। वी हैव ओनली वन लोग, लेट अस सपोज दैट दिस वाज पॉजिटिव एंड दिस वाज आल्सो पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव ही यहाँ पे रहेगा, दिस इज बीएमओ, क्लियर है, दिस इज बीएमओ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, when we are talking about the ABMO, तो ABMO हमारे पास कैसा रहेगा, ABMO will be when both of these will combine, तो इनमें wherever they are combining there will be no electron there ना, तो आपके पास कुछ इस तरह से there will be hole created between the atomic orbitals, एक ये हो गया आपके पास, दूसरा इसके just opposite रहेगा, rotate and horizontal, दूसरा इस तरह से रहेगा, the nuclei will be here, यहाँ और यहाँ पे nuclei है, there is no electron between them and obviously these will be formed when we have opposite sign of sign, तो एक पॉजिटिव में रहेगा और दूसरा नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए जरा, हाउ आर वी गोइंग टू राइट द डिफरेंट थिंग्स अबाउट इट, इनके नाम होंगे, नाम कैसे देंगे, सी व्हेन वी आर हैविंग 1s, ठीक है, व्हेन वी आर हैविंग 1s, तो द कॉम्बिनेशन विल बी टेकिंग पार्ट इन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एंड सिंस इट इज व्हाट s and s, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बनेगा, पाई तो बन नहीं सकता बिकॉज देयर विल बी ओनली वन लोब इंटरैक्शन, सो वी विल कॉल दिस सिग्मा 1s, दिस इज अ BMO, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये क्या बना है, दिस इज आल्सो सिग्मा बट दिस इज सिग्मा स्टार बिकॉज इट इज ABMO, सिग्मा स्टार एंड दिस इज व्हाट ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आई सबको, हाँ या ना, जल्दी बताएं, नाम समझ में आया, ठीक है। अब ये बताइए, इफ इट वाज मेड बाय 2s तो क्या बोलते हैं, सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2s स्टार, बात समझ में आ रही है। इफ इट वाज मेड बाय 2s वी वुड हैव कॉल्ड इट सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, गॉट इट गाइस। चलिए जल्दी इसको बनाइए जरा, जल्दी बनाइए, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हम लिख ले रहे हैं, इनको बस कॉपी कर लीजिएगा जी, कुछ कोई कुछ कहना चाह रहा है। So what's the heading? हेडिंग, ठीक है, कुछ कुछ चीजें पॉइंट्स लिख लीजिए,
this will be having this is attraction होगा यहाँ पे. Let me zoom in. Here you will have attraction. ठीक है, attraction की वजह से it will be stable. और अगर स्टेबल है तो ऑब्वियसली इसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर एनर्जी होगी. ठीक है. व्हाट अबाउट हियर, हियर वी विल बी हैविंग रिपल्शन, एंड इफ देयर इज रिपल्शन इट विल बी नॉट स्टेबल, so we'll write unstable, and if it is unstable it will be obviously having higher energy. Just waiting for Khadija and Abdul Hamid. देखिए guys, next we are going to look at the 2s, और अगर 2s तो हो गया, 2p मिक्सिंग. ठीक है ना, pp मिक्सिंग देखेंगे हम लोग. प्लीज राइट सेकंड वन, 2p मिक्सिंग. ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट द p ऑर्बिटल आपके पास या तो इस तरह से मिक्स करेगा, either they will mix like this. ठीक है, ध्यान दीजिए, कुछ मत लिखिएगा अभी. Either they are going to mix like this or they are going to mix like this. This is the internuclear axis, and here we are having the internuclear axis कुछ इस तरह से. ठीक है, have internuclear axis ऐसे. So what can happen when the lobes are meeting on the internuclear axis and when they are meeting above and below the internuclear axis? So there are two different cases. ठीक है, तो हम लोग एक एक करके cases को लेते हैं, and then we will write in 2p mixing. First of all, you will write number one, case one. A combine, atomic orbitals combine on internuclear axis, and this internuclear axis is generally taken as z axis. Okay, the z axis. ठीक है. Now please see, I am writing the p orbital. तो p orbital आपके पास कुछ इस तरह से होगा. p orbital बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है? इसको क्या हमने उल्टा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल. अभी ध्यान से देख लीजिए बस, उसके बाद लिख लीजिएगा. फिर इसको कॉपी पेस्ट, इस बार ये आपके पास आ गया. दिस इज द p ऑर्बिटल. ठीक है. नाउ प्लीज सी, डोंट राइट अभी मत लिखिए. ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बोरो कर लेते हैं यहां से. Now when p orbital they are going to combine, कभी मेरा ना ये काम ही करना बंद करता है. ठीक है, ध्यान दीजिए. When both of these are going to combine, तब आपके पास फिर से दो केसेस बन जाएंगे, राइट. We'll be having again two cases, right? What are the two cases? अगर आपके पास सेम साइन से क्या हुआ, they're combining on the same sign. ठीक है, यहाँ पे हम सेम के लिए लिख देते हैं. सेम के लिए तो क्या हो जाएगा, एडिशन.
So what will happen? One of the lobe will be getting bigger, जैसा आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सिग्मा के लिए था ना वैसा हुआ था, ठीक है। सो इफ दे आर कंबाइनिंग तो ये बड़ा हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे से हो जाएंगे, ठीक है। सो वी विल राइट इट स्मॉल स्मॉल लाइक दिस, ठीक है। सो दिस लोब्स आर कंबाइनिंग, सो ऑब्वियसली दिस एंड दिस लोब विल बी हैविंग सेम साइन, तो मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, सो इफ दिस इज पॉजिटिव दिस विल बी नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव है और ये वाला भी नेगेटिव है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट द sigma bond, right? We have got the sigma bond because there is one lobe interaction on the internuclear axis, and if it is a sigma bond we will call this sigma, and the internuclear axis is z axis, so obviously these orbitals are also what, these orbitals are also the z orbital, तो आपके पास नाम हो जाएगा sigma 2pz, and similarly we are going to make the sigma star, ठीक है। sigma star में क्या होगा, this will be positive, this will be negative ना, एक positive एक negative, so these are going to cancel out each other. When they are going to cancel out each other, तो इधर वाला पोर्शन छोटा हो जाएगा, these two will be smaller, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। So this is, ये आपके पास मान लीजिए पॉजिटिव था, ये वाला नेगेटिव, तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, and this positive then this negative. So when both of these combined, उन्होंने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, that is why we got what we got sigma star 2pz, sigma star 2pz। अब जो बातें यहाँ पे थी आपके लिए, there will be attraction stable and lower energy, similarly repulsion unstable and higher energy, that is also true for sigma 2pz and sigma star 2pz। बात समझ में? यहाँ पे क्या है, here we are having different sign, and that is why there is subtraction। All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Sir, how do you know if it is Z orbital? Because देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का ईजान आप पहले नहीं थे ना, इसलिए आपको नहीं पता। देखिए दीज आर द न्यूक्लियस है ना, या बीच में न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और हमने इस तरह से ये लाइन बनाया, सो दिस इज विल बी द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ना, द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू बोथ द, ये हो क्यों नहीं रहा है यार, जस्ट अ सेकंड, द एक्सिस और the axis which is passing through both the nucleus, ठीक है ना, इतना समझ में आया आपको? Yes, sir. अच्छा, now if these orbitals are having electron density, तब ये बताइए this orbital, both of these orbitals are having electron density in the z axis, सही है? Yes, sir. अगर आप तो pz ही होगा ना, तो px Okay. होगा, बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, चलिए लिखिए जरा इसको, please write this down guys, this is 2p mixing, ऐसे लिख देते हैं हम ना, this is 2pz, okay, everyone done? Khadija, just waiting for you. इल्हाम लिख लिया क्या आपने? अच्छा ठीक है, अच्छा ईजान is not done, Abdul Hamid is done, Izan and Khadija just waiting for you guys. Izan writing? Yes, sir. Izan done, ठीक है। Now we are having case 2. Case 2 में क्या होगा, atomic orbitals will combine above and below the internuclear axis. The internuclear axis is still the z axis, ठीक है, तो z axis is taken as the internuclear axis, the standard is z axis, ठीक है, right? Atomic orbitals combine above and below internuclear axis, ठीक है। कैसे कंबाइन करेंगे, प्लीज सी, दिस इज वन ऑफ द lobes of p orbital, तो जस्ट हम वर्टिकली अपोजिट कर लेते हैं, तो रोटेट
flip vertical, ठीक है, and here I have another p orbital. जो atomic orbital हो, sorry, जो internuclear axis होगा, please see, don't write now अभी. The internuclear axis will be like this, ठीक है. Now you can see easily what is happening. The lobes will be combining on above and below the internuclear axis, है ना. यहाँ बीच से आपके पास internuclear axis जा रहा है, तो ये दोनों लोब कंबाइन करेंगे. Both of these lobe will combine, और ये दोनों लोब कंबाइन करेंगे, ठीक है. So the lobes that are combining are above and below the internuclear axis. अब हम फिर से इसको थोड़ा सा, चलो हटाओ यार, इसको ये करते रहे. देखिए, so we will have two cases. एक केस तो आपके पास क्या होगा, समझ गया भाई. See here, one case when you are having subtraction, the other case will be when you are having addition, है ना. My OneNote is not working properly. कॉपी करके नहीं देगा भाई, कॉपी. इस काफी टाइम लग गया इसमें. देखिए ध्यान से. नाउ व्हेन बोथ ऑफ दीज आर कंबाइनिंग, तो ये समझ लीजिए, ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो आपको एक ओवल टाइप का शेप मिलेगा ऊपर, और एक सिमिलर ओवल टाइप का शेप मिलेगा नीचे, बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विल बी हियर. यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया. ठीक है, दिस इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. Now obviously if these two are combining, तो इनका भी पॉजिटिव साइन होगा, इनका भी पॉजिटिव. This will be negative and negative. Now when you are going to look at the combination when they are having different sign, ये तो सेम साइन की बात हो गई, सेम साइन तो ऐड हो जाएगा. And when you are having different sign, so they will be getting subtracted. So when these will subtract, तो थोड़ा सा हिस्सा इधर बच जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा इधर बच जाएगा, ठीक है, बीच से गायब हो जाएंगे. तो you will be having something like this, इस तरह का थोड़ा सा और इधर रहेगा, थोड़ा सा इधर बच गया, थोड़ा सा इधर बच गया, ठीक है. एंड इस तरफ से थोड़ा सा बच गया, ठीक है. हियर यू आर हैविंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ऑब्वियसली साइन विल बी अपोजिट. तो ये अगर पॉजिटिव साइन है, फेस पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट वी हैव फॉर्म्ड, इनको हम पाई बोलते हैं बिकॉज इट इज कंबाइनिंग अबव एंड बिलो, है ना. अगर सेम ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कॉम्बिनेशन होता तो सिग्मा बोलते. अबव एंड बिलो हो रहा है तो क्या बोलेंगे इनको, यू विल कॉल दिस पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो दिस विल बी पाई स्टार, सॉरी दिस विल बी पाई 2p. ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p. दिस इज योर BMO, दिस इज योर ABMO. Copy this guys, let me know once you're done. लिखे सबने,
ठीक है, ध्यान सुनिए अब एक बार। अगर ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इफ दिस इज योर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, सो एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, ये क्या है, जेड एक्सिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, सो दीज ऑर्बिटल्स कैन आइदर बी px px और py py, pz तो हो ही नहीं सकता। मेक सेंस यस और नो, प्लीज टेल मी, बताइए। ये जो ऑर्बिटल होंगे, दिस इज द जेड एक्सिस, ये क्या है आपके पास, दिस इज द जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस है आपके पास। नाउ द लोब्स आर नॉट इन द जेड एक्सिस ना, तो ये क्या हो सकता है, आइदर इट विल बी px और इट विल बी py। समझ में आ रही है, हाँ या ना? खदीजा, Yes, sir. इंसान, इल्हाम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दिस विल बी आइदर 2px या फिर 2py होगा। अगर हम प्लीज राइट अ क्वेश्चन, थोड़ा हम सवाल करते हैं आप लोगों से, आप बताइएगा। कंसिडर z axis as IN. What MO are formed by LCAO of the following? पहला सवाल हम कर रहे हैं आपके लिए, फिर आप लोग बताते जाइएगा, ठीक है ना? ध्यान सुनिए और माइक ऑन करके रखिए सब कोई, प्लीज राइट दिस क्वेश्चन एंड टर्न योर माइक ऑन क्विकली। माइक ऑन करे जल्दी। खदीजा, इल्हाम, खदीजा, if you can turn your mic on, it will be very helpful for you only. खदीजा, mic on, mic on, mic on, ठीक है। सुनिए, अभी बताइए, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है, हाँ या ना? करेक्ट है, वी गेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यस और नो? Yes, sir. यस ना, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे कितने टाइप की, एक आपको मिलेगा बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा क्या मिलेगा? Anti-bonding. एबीएमओ। अरे बोलो भाई, इल्हाम एंड खदीजा, एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब बताइए, वी हैव 2s एंड 2s, आपके पास s ऑर्बिटल है, वी हैव ओनली s ऑर्बिटल, तो क्या बनेगा, सिग्मा या पाई? Sigma. Sigma. ठीक है, तो बीएमओ में क्या मिलेगा आपको, सिग्मा, और नाम क्या रहेगा इसका, सिग्मा 2s, एंड एंटी बॉन्डिंग में क्या नाम रहेगा इसका, बोलो, Sigma किसान आप मत 2s बोलिए। star. हाँ वेरी गुड, सिग्मा 2s स्टार, ठीक है। आज समझ में आई खदीजा? पक्का? हाँ ना तो बोलो, मुंडी हिला रहे हैं बस आप। आई ना बात, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अब आप बताइएगा, इसी तरह से आपसे अगर पूछे खदीजा, आप बताएंगे, ठीक है। 3s एंड 3s का है, तो एक तो आपको मिलेगा बीएमओ, एक मिलेगा एबीएमओ, है ना? ठीक है, अब बताइए 3s है तो क्या होगा, सिग्मा, बोलो बोलो, और एबीएमओ में सिग्मा स्टार 3s, ठीक है, सिग्मा स्टार 3s, ठीक है, सिग्मा स्टार 3s और सिग्मा 3 स्टार। बात समझ में आई? ठीक है, अब ध्यान सुनिए, आपके पास कौन सा एक्सिस है अभी, तो व्हेन वी हैड ओनली s, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन वी हैड ओनली दी s सब शेल, वी डिड नॉट केयर whether we have z axis, y axis, p axis, कुछ भी एक्सिस हो जाए, y axis, x axis, z axis, it is only going to give you what, sigma bond. But when we talk about the p subshell, secondly, and this is third, if we are having 2px and 2py and sorry 2px and 2py नहीं होगा, 2px and 2px ही होगा, ठीक है। if you are having 2px and 2px, ये भी आपको क्या देंगे, एक आपको बीएमओ देगा और एक आपको क्या देगा, एबीएमओ, बात सही है? ये तो है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो दो ही बनेंगे। अब यहां पे बात आएगी कि सिग्मा बनेगा या क्या बन सकता है, सिग्मा या पाई, सिग्मा या Pi. पाई। अब आप लोग चैट में जरा हमको मैसेज करिए, सिग्मा बनेगा या पाई। यू विल गेट सिग्मा हियर और पाई हियर। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज द जेड एक्सिस, तो चैट में बताएं वेदर वी विल गेट सिग्मा और पाई। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। तो आप सिर्फ आंसर आया ईजान का, और किसी का आंसर ही नहीं आया है ना। इल्हाम, खदीजा एंड अब्दुल हमीद, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग रिवाइज करते हुए आए। अरे भाई, तुम लोगों को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बारे में तो बताया है ना, इल्हाम, खदीजा, ये सुनो, नहीं बताया Yes. है? फिर क्यों नहीं कोई जवाब आया? जवाब क्यों नहीं आया आप लोगों का, बताइए। बना देखो। हाँ ठीक है खदीजा, देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये आपके पास जेड एक्सिस है, दिस इज योर जेड एक्सिस, ठीक है। क्या है ये जेड एक्सिस? अब हम 3 ऑर्बिटल बना रहे हैं, ठीक है। चलो 2 ऑर्बिटल बना रहे हैं, एक आपको हम रेड से बना ले रहे हैं और एक आपको हम व्हाइट से बना ले रहे हैं, ठीक है। बताइए रेड वाला पीएक्स कौन सा होगा, रेड वाला या व्हाइट वाला? दिस इज द जेड एक्सिस, व्हाइट वाला होगा ना, पक्का क्लियर सबको? Yes. इल्हाम एंड खदीजा सबको क्लियर ना? अब बताओ दूसरा भी क्या होगा, ऐसे ही होगा। अब ये जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा या पाई बनाएगा भाई मेरे इजान? Sigma. सिग्मा कैसे Pi. बनाएगा यार, पाई ना बनाएगा। अभी तो बनाया देखो, अभी क्या बनाया आपने, ऐसे ही तो था दिखा ईजान भाई मेरे। Yeah. ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल से बात है, आप पुराने लेक्चर्स देखिए ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हियर वी आर हैविंग इंटरेक्शन ऑफ 2 लोब्स, करेक्ट है? Yes. बोलो, 2 लोब, लोब लोब जानते हैं आप लोग, समझ में आ रहा है ना, ईयर लोब से जैसा Yes. होता है, ईयर लोब होता है ना, वैसे ही आपके पास ये है ना लोब। सो हियर वी आर हैविंग इंटरेक्शन ऑफ 2 लोब्स, 2 लोब के इंटरेक्शन से वी विल ऑलवेज गेट पाई, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर हम पी वाई की बात करें, ये आपका जेड एक्सिस है, तो पी वाई भी तो परपेंडिकुलर ही होगा ना, वी कैन से दैट वी विल बी हैविंग पी वाई लाइक दिस, है ना। पी वाई भी तो ऐसे ही होगा। अरे Yes. भाई, नहीं होगा क्या, पी वाई ऐसे हो जाएगा क्या, ऐसे होगा क्या पी वाई? इल्हाम, खतीजा, हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार, जेड एक्सिस है, इज दिस पी वाई और पीजेड, ये क्या होगा, सिर्फ पीजेड होगा ना। हाँ, इल्हाम को तो Yes. नहीं समझ में आ रहा, और एब्सेंट कीजिए आप, इल्हाम का चेहरा देख के समझ में आ रहा है। पी वाई में भी आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट पाई बॉन्ड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास एंटी बॉन्डिंग और बीएमओ की बात करें हम, तो बीएमओ विल बी पाई टू पी एक्स एंड एबीएमओ विल बी पाई टू पी एक्स स्टार। प्लीज राइट दिस डाउन, ऊपर वाला भी लिख लीजिए जरा। नतीजा ने हम गन राइटिंग ये सुनो, लिखने समय चलिए ठीक है। अब जरा सवाल आपका यहाँ से आ सकता है, देखिए, दे कैन आस्क यू टू राइट दी conditions for the formation of or conditions for LCAO, linear combination atomic orbitals की conditions, ठीक है। राइट,
conditions for LCAO, linear combination of atomic orbitals के लिए क्या conditions है? Right, atomic orbital should have same or slightly different energy. Right, second point. Atomic orbitals should have same symmetry. Right, next. My atomic orbital should have maximum extent of overlapping. Maximum extent of overlap. बात समझ में आ गई सबको? आया जल्दी बताएं। ठीक है, Yes, sir. तीन कंडीशन है, अब ध्यान से सुनिए जरा. If we talk about the different types of atomic orbitals, then we have atomic orbitals such as 1s. तो 1s से आपको क्या क्या मिलेगा? 1s से आपको मिलेगा सिग्मा 1s और आपको मिलेगा सिग्मा स्टार 1s. We have 2s and 2s 2s से कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिग्मा 2s and सिग्मा स्टार 2s. और उसके बाद क्या आएगा? You will have then 2p. 2p अगर कंबाइन करेगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz. और आपको अगर x और y की हम बात करें, so you will also get pi 2px and which will be equal to the energy of pi 2py. उसी तरह से pi star 2px and pi star 2py will be having same energy. So we just need to understand these atomic orbitals. इतना आपको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 1s से you will get sigma 1s and sigma star. अरे कहाँ देख रहे हैं आप? इल्हाम कहाँ ध्यान है आपका? इल्हाम स्क्रीन पे देखिए, ठीक है? You have 1s से आपको क्या क्या मिलेगा? सिग्मा 1s and sigma star 1s. 2s से क्या क्या मिल रहा है? सिग्मा 2s and sigma star 2s. From 2p we are getting sigma 2pz and sigma star 2pz. है ना? And in p we are going to have three orbitals, right? pz, px and py. Since our internuclear axis is z-axis, that is why we are getting the sigma bond from the 2pz, and the pi bond will be formed by pi, that is px and py. Now what is the energy of these particular molecular orbital? इनको arrange करना पड़ेगा. अगर आपको ध्यान हो, in the case of atomic orbitals we also arrange them कि 1s 2s ना 1s2 2s2 2p6 जैसा अरेंज किया था उसी तरह से इसको भी अरेंज करना पड़ेगा. So we'll write next thing, that is the order of energy of MO. देखिएगा आप लोग, हेडिंग लिखिए, प्लीज राइट दी हेडिंग. Order of energy of MO, molecular orbitals. ठीक है? In this you will be having two different cases. आप सबसे पहले लिखिए number 1, that is case 1. When the number of electron is greater than 14. जब आपके पास number of electron greater than 14 है तो क्या होगा? Please write. You will have sigma 1s, which will be having the least energy, which will be followed by sigma star 1s. This will be followed by sigma 2s, followed by sigma star 2s. This will be followed by sigma 2pz. This will be followed by sigma 2pz के बाद आएगा आपके पास pi 2px, which will be equal to pi 2py. उसके बाद आपके पास आएगा pi star 2px, which will be equal to pi star 2py.
and at last you will have the sigma star 2pz. ठीक है, so these are the different molecular orbitals, और ये बिल्कुल molecular orbitals क्या है, इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सारे में कितने रहेंगे, दो दो रहेंगे ना, सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सिग्मा स्टार 1s में भी दो रह सकता है, ठीक है। देन यू विल राइट द केस 2, केस 2 लिखेंगे जरा। When you have number of electron which is equal to or less than 14, जब आपके पास equal to या less than 14 आ जाए, ठीक है। So you have sigma 1s, sigma star 1s, then we have sigma 2s, then we have sigma star 2s, after that you will have sigma 2pz, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा। After this you will be having sigma, एक सेकेंड, सिग्मा 2pz नहीं होगा यहाँ पे, सिग्मा 2s के बाद ही चेंज हो रहा है, एक सेकंड, डोंट राइट दिस, 2pz गलती लिखा हमने, यहाँ पे ऐसे स्टार्ट होगा। फ्रॉम हियर यू विल बी हैविंग अ चेंज, आपके पास पहले आएगा पाई 2px, पाई 2px equal to pi 2py. Now after this you will have the sigma 2pz, and then you will have pi star 2px equal to pi star 2py, and as before you will have sigma star 2pz. Now if you see till here everything is fine, है ना, आपके पास ये जो पर्टिकुलर सिग्मा 2 स्टार एंड सिग्मा 2 स्टार यहां तक सब कुछ सेम है, द डिफरेंस इज आफ्टर हियर। इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, दैट वेयर यू आर हैविंग डिफरेंसेस फ्रॉम, you are having differences from after the sigma star 2s, you are having differences after the sigma star 2s। अगर इसको याद करने की बात आए तो ना हम ऐसे बोलते हैं, यहां तक तो लिख लेंगे सभी को, आई होप, sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, right? Then after that if you have to remember, कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिए जरा। Number of electron is greater than 14, so what is the number after 14 guys, what is the number after 14? 14 के बाद कौन सा नंबर आता है, 15। 15 क्या होता है, ऑड, तो ऑड से आपको याद रखना है 1, और 1 से आपको याद रखना है 1 2 2 1। सबको दिख रहा है या ना, जल्दी बताएं, है ना, वी हैव 1 ऑर्बिटल, फिर साथ में डबल, फिर डबल, फिर 1, ठीक है। अच्छा 14 क्या है, इट इज इक्वल टू 14 ना, तो 14 का मतलब क्या हुआ, इवन, इवन का मतलब हुआ 2, कैसे लिखना आपको, 2 1 2 1। इफ इट इज मोर देन 14 तो क्या हो जाएगा, केस 1, केस 1 मतलब 1 2 2 1। इफ इट इज इक्वल टू 14 तो इवन, इवन मतलब 2, तो आपके पास क्या होगा, केस 2, इवन मतलब केस 2, और केस 2 में क्या है, 2 1 2 1। लिख लीजिए जरा इसको भी, हाउ टू रिमेंबर दिस। 1 2 2 1 है आपके पास when you have more than 14 electrons, and it is 2 1 2 1 when you have equal to or less than 14 electrons, equal to or less than 14 electrons। we are moving towards, अब हम धीरे धीरे ना मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, like we will be having molecules and we will be applying molecular orbital theory on it, ठीक है। अब कुछ रिमार्क्स लिख लीजिए जरा, if you're done writing this you will write remarks। रिमार्क्स में नंबर 1 पॉइंट आप लिखिएगा सबसे पहले, वी यूज NB, अच्छा 1 करके स्टार कर लीजिए ना, 1 2 कितना करिएगा, NB, NB का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगला लिखिएगा, वी विल कॉल सम थिंग्स Na, Na is nothing, it is a number of electrons in anti bonding molecular orbital, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस बट फिर भी लिख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2,
The whole thing divided by 2. It is half of the number of bonding orbit electrons minus the number of anti-bonding electrons. ठीक है? Now, then we will be talking about the existence of a molecule. Existence of a molecule. ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है. ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात समझिए आप. नंबर 1 पहला की समझिए, अगर हम ए और बी के बीच में बात करें एंड इफ देयर इज नो बॉन्ड हियर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसके लिए? 0, है ना? एंड इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज 0, तो ऑब्वियसली ए बी के अंदर बॉन्ड ही नहीं है, तो मॉलिक्यूल कहां से होगा? इफ ए बी डज नॉट हैव एनी बॉन्ड, देन व्हाई इट विल बी मॉलिक्यूल. ठीक है? तो सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखिए आप लोग, दैट इफ इट इज नॉट हैविंग अ बॉन्ड, दैट मींस इट इज नॉट अ मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल होने के लिए आपके पास क्या चाहिए? बॉन्ड होना जरूरी है. ध्यान दीजिए जरा. व्हेन यू हैव नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग. ठीक है? तो उस केस में आपके पास क्या लिख सकते हैं आप? देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर जो होगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू एन बी बड़ा है, एन ए छोटा है. तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? एन बी बड़ा है, एन ए छोटा है. यहां पे प्लग इन करके बताइए, द बॉन्ड ऑर्डर विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव या 0? Positive. Positive. पॉजिटिव. वेरी गुड, है ना? तो पॉजिटिव होगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब 1 2 3 4 ऐसा कुछ नंबर. एंड इफ 1 2 3 4 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या? बॉन्ड होना. दैट इज व्हाई वी विल से दैट हेंस क्या बोल सकते हैं हम? बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव एंड द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट्स. बात समझ में आई? अगर दूसरा केस ले लें हम, व्हेन वी हैव द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग. इन इस केस में therefore what we will write, bond order it is equal to कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर जब दोनों सेम हो जाए, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्ड. अरे क्या करते रहते हैं आप इल्हाम? क्या कर रहे हैं आप? हाँ इल्हाम, क्या कर रहे हो आप? Sir, I was just writing. Why were you writing? हम जब चुप हो जाए तो आप लिख लीजिए. ठीक है? बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ध्यान दीजिए ना अभी. बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग? 0. देखो भाई, देखो कहा, देखो इल्हाम नहीं समझ में आ रहा है ना? इल्हाम कितना होगा बताओ बॉन्ड ऑर्डर? आज बिल्कुल मन नहीं है इल्हाम का पढ़ने का, है ना इल्हाम? एंड मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. इतना अच्छा आप जवाब देते थे, आज बिल्कुल जवाब आप भी नहीं दे रहे हैं. आप पता नहीं था उधर बिल्कुल क्या क्या कर रहे हैं आप. सुनिए अब, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इट इज लेस देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग. तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. इट विल बी नेगेटिव एंड मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. देयर आर फ्यू टर्म्स जिसको हम लोगों को लिखना है. अभी मत लिखिए, ध्यान दीजिए. नेक्स्ट है आपके पास, अभी देख लीजिए जरा, बस एग्जिस्टेंस को ना देख लीजिए एक बार कि सही सही है नहीं समझ में आ रहा है आपको सब कुछ. 3 केसेस बनेंगे, तीनों केस आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है? नाउ देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. जिनको हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल दिस एज बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो, है ना? इसको क्या बोल सकते हैं आप? बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ. नाउ जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, विल हैव उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा. एंड विल हैव टू पुट मोर एनर्जी टू ब्रेक इट ना. डिसोसिएट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. तो बॉन्ड अगर एक ही बॉन्ड है तो कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, 2 बॉन्ड है तो और ज्यादा, 3 बॉन्ड है तो और ज्यादा. ठीक है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्ट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर. अगली बात सुनिए, बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ this will be also, it will be also inversely proportional to the bond order. Why? Because जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना ज्यादा attraction. If there is more attraction, that means the atoms are nearer. If the atoms are nearer, that means the bond length will be obviously smaller. अगली चीज आएगी stability. जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा attraction, जितना ज्यादा attraction उतना ज्यादा stability. Now next is the magnetic behavior or magnetic property. Magnetic property.
ठीक है. सो इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपके पास दो केसेस हो सकते हैं. यू विल आइदर हैव ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. एक ये केस हो सकता है. इफ ऑल आर पेयर्ड वी कॉल दोस टाइप ऑफ कंपाउंड्स डाईमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक. Diamagnetic. Second case, if you have even one electron, it is even one electron is unpaired, है ना? One electron is unpaired. आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि अनपेयर्ड है, तो उसको बोलते हैं क्या? ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे पैरामैग्नेटिक. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही है. आप इसको नोट डाउन कीजिए आराम से, बिल्कुल ठीक है. दीज आर द रिमार्क्स. ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. उसके बाद वी विल do the molecular orbital theory and we will apply the molecular orbital theory in atoms like H2, He2, N2, O2, F2. इन सब चीजों पे हम लोग अप्लाई करेंगे and we will see, we will talk about these things: number of bonding, number of anti bonding, bond order, existence of molecule, the bond. ये सारी चीजों के बारे में वो बात करेंगे. ठीक है. चलिए जल्दी लिखिए सुधरा. राइट ऑन द रिमार्क्स लिखिए. अब इल्हाम लिखिए. अब गुस्सा हो गया क्या इल्हाम? हाँ, नहीं डांटना चाहिए था. हाँ, कहाँ ध्यान है आपका? बिल्कुल आज ध्यान नहीं था. ठीक है. In the remarks, if you don't understand any point, please let me know. Let me know once you're done writing. ठीक है. जल्दी से लिखिए. उसके बाद बताइए जब आपको हो जाए.